Hello dosto, my name is Neha. So today we will see the structure of the bacterial cell. This is the part 2 video. In the part 1 we have seen the what is the flagella, pili, capsule and cell wall. In the part 2 we will see what is cytoplasmic membrane, cytoplasm, ribosome, mesosome, nucleus and spore. So now we'll start the first. What is cytoplasmic membrane? It is also called as the plasma membrane. It is the thin and it is around 5 to 10 nanometer layer. And in this this plasma membrane composed of the two things. First is the phospholipid. It is around 20 to 30% and protein 60 to 70% are the present. In this membrane, two proteins are present. First is the integral protein and second is the peripheral protein. So what is integral protein? So the phospholipid that form the bilayer in which most of the proteins are held inside that phospholipid bilayer is called as the integral protein. If we remove this protein, we can give the treatment by detergent. Then we can remove this integral protein. And other protein are the loosely attached and can be removed by the mild treatment. So by osmotic shock. So this protein is called as the peripheral protein. So the phospholipid molecule are arranged in the two parallel rows. They are called as the phospholipid bilayer, and in that contain two things. First is the polar head and second is the non-polar tail, and this polar head is composed of the phosphate group as well as glycerol. Here you can see the diagram of the phospholipid bilayer. So this is the phospholipid bilayer, this is the polar head and this is the non-polar tail. This is called as the phospholipid, and this outermost protein is called as the peripheral protein, and this inside protein is called as the integral protein. So this is the structure of the phospholipid bilayer, and in that contains the two proteins, peripheral and integral protein. So now next is the function of the cytoplasmic membrane. So what is the function? So first it acts as a semi-permeable. What is semi-permeable? Because they allow the only selective nutrient from in and out of the cell. It is called as the semi-permeable membrane. It provides the mechanical strength. Also it helps in the DNA replication. And in that one enzyme is contained that name is permease, which plays the important role in the passage of selective nutrient throughout the membrane. Okay, and it contains the enzyme. It also contains the enzyme that involved in the biosynthesis of the membrane lipid and various other macromolecules of the bacterial cell wall. So this is the function of the cytoplasmic membrane. So next part we will see the cytoplasm. So cytoplasm क्या होता है? Cytoplasm is a bacterial cytoplasm is a suspension of the organic, inorganic solute that present in a viscous water solution. So this cytoplasm we can differ from the eukaryotic microorganisms because the bacteria is the prokaryotic microorganism, and जो भी other eukaryotic organisms होते हैं उसमें क्या क्या present होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो कि ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है. तो क्या क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में? इट कंटेन्स दी न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोटीन एंड अदर वाटर soluble components. So in the most of the bacteria, the one thing is present that not present in the eukaryotic microorganism. So what are that? So extra chromosomal DNA, it is also called as the plasmid DNA, that is present only in the bacterial cell or prokaryotic organism. So next part is the ribosome. So all of you know the what is the function of ribosome. Mostly they involve in the protein synthesis. So क्या होता है प्रोटीन राइबोसोम का फंक्शन? they involve होते हैं for the protein synthesis. So what is the rate of the protein synthesis and ribosome? So they are directly proportional. Means greater the number of ribosome, it means greater the number of protein synthesis. So in the prokaryotic organism, they are referred as a 70S ribosome. S stands for Swedberg unit, that is a unit of sedimentation. So in the eukaryotic organism, there are 80S ribosomes are present, and in the prokaryotic, like bacteria, it contains the 70S ribosome. So these 70S ribosome again split it into the you can see in this diagram, the 70S ribosome split into the 30S subunit and 50S subunit. Okay, so this 30S subunit again divided into 16S RNA. S means small RNA, and 21 different proteins, and this 50S again divided into 5S RNA, 23S RNA, and 32 different subunits. So this is the about the ribosome. Next we will see the mesosome. So what are the mesosomes? In some bacteria, particularly in the gram-positive bacteria, so depending on the growth conditions, the membrane appears to be infolded at more than one point. Here you can see in this diagram. यहाँ पे क्या हुआ है देख सकते हो आप, membrane infold हुई है. इस part को हम बोलते हैं mesosome. तो अभी mesosome में दो types होते हैं. First is the central mesosome,
एंड सेकंड इज द पेरिफेरल मेसोसोम. सेंट्रल मेसोसोम को आप देख सकते हो जो कि सेंटर में है, एंड पेरिफेरल इज द आउटसाइड या फिर टर्मिनल में है बैक्टीरियल सेल के, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल मेसोसोम. ठीक है, एंड इस सेंट्रल को हम अनदर वर्ड भी है दे सकते हैं सेप्टल मेसोसोम, एंड पेरिफेरल को बोल सकते हैं लैटरल मेसोसोम. सो जनरली दिस जो सेंट्रल मेसोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डीप इनटू द साइटोप्लाज्म एंड लोकेटेड नियर मिडल ऑफ द सेल, एंड मोस्टली दे इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन प्रोसेस और इन्वॉल्व इन द डीएनए सेग्रीगेशन प्रोसेस. ठीक है, एंड ये जो पेरिफेरल मेसोसोम होते हैं दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब वो सेंट्रल पोजीशन पे नहीं है, एंड दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मटेरियल डिसोसिएशन. ठीक है, so this mesosome is also called as the chondroids, and mostly they visualize under the electron microscope. This all about the mesosome. Next we will see the इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. सो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट देखा हमने साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होता है, देन उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जैसे फर्स्ट हमने देखा राइबोसोम, देन सेकेंड देखा मीटोसोम, अभी हम थर्ड देखेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. जैसे कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. इसमें थ्री टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इज दी वोलुटिन ग्रैन्यूल्स, second is the lipid granule, and third is the polysaccharide granule. So these volutin granules is also called as the metachromatic granules, and they mainly they responsible for the intracytoplasmic storage of the complex inorganic phosphate material. And we can see this volutin granule with the help of the Albert special staining technique. And second granule is the lipid granule. This consists of the polymerase beta hydroxybutyric acid, and we can see these granules with the help of the जिल नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक. एंड नेक्स्ट लास्ट ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे वो होता है पॉलीसेकेराइड ग्रैन्यूल. दे कैन बी स्टेन विद द हेल्प ऑफ द आयोडीन, एंड ये जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें ये दिस इज मेड अप ऑफ द आइदर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. ग्लाइकोजन का अपीयरेंस होता है रेड ब्राउन, एंड स्टार्च होता है ब्लू इन द कलर. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. सो दे मोस्टली अपीयर्स एज द राउंड ग्रैन्यूल. नेक्स्ट वी विल सी nucleus. So what is nucleus? So nucleus is the centermost part of the bacterial cell, and this bacterial cell can be demonstrated by या फिर destroyed by the acid or ribonuclease hydrolysis, and we can see this nucleus in the light microscope after the staining. We stain use in this for the हमें न्यूक्लियस को सीन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं, फ्लोरोजेन स्टेन, और हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते हैं. सो दिस ये जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे दिखता है या अपीयर होता है, ओवल और इलोंगेटेड बॉडी, जनरली वन पर सेल प्रेजेंट होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट अरेंज इन द सर्कल. अगर इस न्यूक्लियस को अगर हम ओपन करेंगे अंडर सर्टेन कंडीशन, दे फॉर्म द लॉन्ग चेन अबाउट 1000 माइक्रोन मीटर इन दी लेंथ. ठीक है, so this bacterial nucleus they does not possesses the any nuclear membrane, nucleolus or deoxyribonuclear protein, but they present in the eukaryotic organism because bacteria are the prokaryotic microorganism. ठीक है, so these bacterial chromosomes is a haploid mesosome, therefore they replicate by the simple binary fission. ठीक है, so these bacterial cell possesses the extra nuclear genetic elements that consist of the DNA. So that extra chromosomal DNA we can called as the plasmid, और plasmid का alternate name होता है episomes. ठीक है, and they may be transmitted to the daughter cell. अभी जैसे एक बैक्टीरियल सेल होती है उसके डिवाइड होते हैं बाइनरी फिशन में टू में कन्वर्ट होता है, तब ये जो प्लाज्मिड होता है ये ट्रांसमिटेड टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन और बाय द कॉन्जुगेशन प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे स्पोर. स्पोर क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरियल स्पेसीज दे प्रोड्यूसेस द स्पोर इनसाइड द सेल. अगर वो इनसाइड द सेल है इट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर, एंड वो आउटसाइड द सेल है इट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्पोर. उसमें हम एग्जांपल बोल सकते हैं ऐसे कौन से बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस सबटिलिस, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरियल स्पेसीज. सो नेक्स्ट फर्स्ट होता है एंडोस्पोर. अभी एंडोस्पोर क्या है, जो कि हमने फर्स्ट लाइन में देखा उसका डेफिनेशन, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, द स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर. सो these एंडोस्पोर मोस्टली thick in appearance, thick walled, highly refractive bodies, and they are produced one per cell. And mostly ये जो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं वो वन पर सेल रहते हैं. ऑन जर्मिनेशन दे फॉर्म अ सिंगल वेजिटेटिव सेल, एंड जैसे कि the sporulation in the bacteria
मेनली हेल्पफुल होता है फॉर द प्रिजर्वेशन, नॉट फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब प्रिजर्वेशन क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर दिस फोरुलेशन इज मोस्टली हेल्प bacteria for the survive for the long period of the time under the unfavorable condition। unfavorable condition में उसको कुछ भी प्रॉपर ना टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर है, उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है। एंड ये जो एंडोस्पोर होता है उसमें कोर या इन्वोल्व होता है, या फिर उसको हम प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। एंड दैट प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स दी डीएनए एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में आपको फर्स्ट मैंने बताया कौन इन्वॉल्व होता है, मोस्टली राइबोसोम, टीआरएनए और एंजाइम। ठीक है। एंड जो स्पोर होता है उसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है आप देखोगे, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन, कॉर्टेक्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड स्पोर कोट। हियर यू कैन सी this diagram, this is the structure of the spore. So this outermost part is called as the exosporium, that is outside of the spore. Then next you will see the spore coat. Then inside the spore coat there is the outer membrane. Then this is dotted line is called as the spore cortex, and inside the spore cortex is the inner membrane, and this inner membrane contains the this granule like structure is called as the protoplast or core, and in that contains also the ribosome that mostly helpful in the protein synthesis. So this is all about the structure of the bacterial cell. In the part 2 we have covered all these things, and in the part 1 we have covered the what is flagella, pili, capsule and cell wall. Okay, thank you all for watching this video.